हेलो एवरीवन, आई एम कपिल शाह एंड यू आर वाचिंग वीकली मार्केट एनालिसिस बाय फुलन एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये वीक मार्केट के लिए कैसा रहा हुआ है, आने वाले वीक में मार्केट का क्या रुझान हो सकता है, साथ में सेक्टर स्पेसिफिक एंड स्टॉक ऑफ द वीक डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस ट्रेडिंग वीक में मार्केट के 4 ही ट्रेडिंग सेशन थे। वीक की शुरुआत काफी खराब नोट पे हुई थी, लेकिन सेम डे पे ही हमने एक रिकवरी देखने मिली थी एंड ऑन द वेरी नेक्स्ट डे मार्केट ने काफी अच्छी मोमेंटम दी थी। दैट मोमेंटम वाज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंटम इन दिस 4 मंथ पीरियड वी कैन से। मार्केट ने अपना बॉटम 17,100 के लेवल पे बनाया हुआ था। सो दिस पॉइंट वी वर डिस्कसिंग इन आवर प्रीवियस वीडियो कि मार्केट का इमीडिएट सपोर्ट लेवल 17,200 के लेवल के यहाँ पे होना चाहिए और वहां से हमने एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखने मिला हुआ है। मार्केट ऑन वीक बेसिस पे के कंपेयर करें तो -0.18% से डिक्लाइनिंग मोमेंटम पे बंद हुआ है। फ्रॉम अ डेरिवेटिव परस्पेक्टिव, नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए दैट इज इन वीकली एक्सपायरी 17,800 17,900 दैट इज व्हाट एन हाईएस्ट कोल बेस बने हुए हैं एंड ऑन द डाउन साइड 17,500 जो अभी करंट का लेवल है फॉलोड बाय द 17,300 एक पुट के बेसिस बने हुए हैं विच इज इंडिकेटिंग दैट के पोटेंशियल सपोर्ट लेवल। मार्केट का टेक्निकली परस्पेक्टिव से नेक्स्ट वीक के लिए क्या रुझान हो सकता है, टेक्निकली कौन से ऐसी डेवलपमेंट बन रही है जो हिस्ट्री में भी एक छोटा सा रेप्लीकेशन उसका हमें देखने मिला था। सो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पॉइंट। अभी का ये जो स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम आ रहा है और जो करंट पैच हमने एक आध 2 वीक से देख रहे हैं, सो दैट हैज सम सॉर्ट्स ऑफ रिसेम्बलेंस इनटू द हिस्ट्री एज वेल। सो लेट्स ट्राई टू मेक सम सॉर्ट्स ऑफ कंपैरिजंस। तो हमारा पहला प्रीवियस मूव जो हमने देखा हुआ था दैट वाज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। मार्केट ने स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम दिया था, अपने रेजिस्टेंस लेवल पे आया था। देयर वाज सम सॉर्ट्स ऑफ डिक्लाइनिंग मोमेंटम दैट वी हैव विटनेस। ये डिक्लाइनिंग मोमेंटम आपका यहाँ पे कुछ गैप डाउन्स आपको देखने मिले हुए थे। गैप डाउन होके देयर वेर सर्टेन काइंड ऑफ द कंसोलिडेशन पैचेस दैट वी हैव सीन। आपका एक रेंज यहाँ पे देखने मिला हुआ था। ये रेंज को फ्रॉम अ टाइम परस्पेक्टिव हम देखते हैं, सो इट हैज बीन अराउंड 10 to 12 days kind of things after it has broken on the downside and we have seen the another leg of declining momentum. So this is what the things that we have seen into the previous move. Now इस मूव में हम देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम देखने मिलती है। स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम कहाँ ना कहाँ पे उसके पहले के रेजिस्टेंस लेवल पे आते हैं। वी हैव सीन द वेरी वन कैंडल इन अ डिक्लाइनिंग मोमेंटम, इट हैज फॉर्म्ड अ सर्टेन काइंड ऑफ गैप डाउन एरिया। फाइन, यहाँ पे हमें गैप देखने मिल रहा है। गैप डाउन होने के बाद में मींस लेट्स से कि यहाँ पे भी आपका गैप डाउन देखने मिला था। देयर वेर अटेम्प्ट्स कि इस गैप को फिल करने की कोशिश की हुई थी एंड देयर आफ्टरवर्ड्स इंटरनली वी हैव सीन द लॉट्स ऑफ मोमेंटम कि मार्केट वाज क्वाइट अप देन अगेन इट वाज कम डाउन। सो दिस इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम वाइज करेक्शन विद एन गुड अमाउंट ऑफ वोलाटिलिटी। सो दिस थिंग इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर पैच एज वेल कि प्राइसेस का एक डिक्लाइनिंग मोमेंटम आया था, गैप डाउन हमने यहाँ पे देखने मिला हुआ था। दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। इस पॉइंट के बाद में मार्केट ने अटेम्प्ट भी किया हुआ है इस पर्टिकुलर गैप को फिल करने के लिए, सो दैट गैप हैज बीन फिल्ड और मार्केट एक कंसोलिडेशन पैच में जा रहा है एंड इन दिस पर्टिकुलर वीक आल्सो वी आर सीइंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ द वोलेटिलिटी। तो ये भी पैच यहाँ पे हम अगर देखते हैं सो इट शोज द सिमिलर काइंड ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। सो बेसिकली आफ्टर द वेरी स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम इट इज नॉट सो दैट कि हमें इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग डिक्लाइनिंग मोमेंटम देखने मिले, जैसे वी शेप रिकवरी होती है वैसे ही वी शेप फॉल देखने मिले। काफी टाइम ऐसा नहीं होता है। प्राइसेस हैज वेंट अप, इट इज कंसोलिडेटिंग राइट नाउ एंड देन वी हैव टू टेक अ क्यू कि कौन सी साइड इसमें ब्रीच होती है। सो फॉर नाउ इट इज इन अ टाइम वाइज करेक्शन हम बोल सकते हैं। टाइम वाइज करेक्शन में जो रेंज बन रही है सो दैट रेंज ब्रॉडली स्पीकिंग 17,700 ऑन द हाई साइड जो कि इस पर्टिकुलर पैच का अपर बैंड रहा हुआ है एंड द लोअर साइड आई एम टेकिंग दिस वन क्योंकि दिस वाज एन काइंड ऑफ द एक्सेप्शनल थिंग कि प्राइसेस इंट्राडे इट केम डाउन एंड इट इज रिकवर्ड एज वेल। इफ आई लुक एट द लाइन चार्ट सो यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट ओनली 17,350 लेवल अराउंड। सो आई कंसिडर दिस एज एन इमीडिएट रेंज कि 17,700 से लेके 17,300 का एक कंसोलिडेशन रेंज रहना चाहिए। ऑन द डाउन साइड 17,300 का लेवल का ब्रीच करता है, सो वी हैव द नेक्स्ट बेस्ट सपोर्ट लेवल अराउंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट 17,100 लेवल। 17,100 तक मार्केट स्टिल इज अंडर द
शॉर्ट टर्म पॉजिटिव व्यू वी कैन से, बट ऑफकोर्स जब भी हम 70,700 से हमें कुछ रिएक्शन देखने मिलता है, सो फॉर अ लॉन्ग द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो विल नॉट बी इन दैट मच फेवरेबल. सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इन 70,350, और वो लेवल ब्रीच होता है देन 70,100, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर अ बुल्स इन अ शॉर्ट टर्म. अगर 70,100 लेवल ब्रीच होता है, सो देन देर इज इन सम शॉर्ट्स ऑफ डिक्लाइनिंग मोमेंटम up to the 16,700 level that we can expect. Above the 17,700 level, the next best variations that we are having is around this period point, that is 18,000 around, which is what our previous peak we can say. That is what the variations point that we are witnessing. So these are the रेंज ब्रेकआउट्स कि कहाँ पे कौन सी रेंज ब्रेकआउट होती है तो कौन से लेवल आ सकते हैं. लेकिन अभी का अंडरलाइंग टोन सिम्स लाइक एन कंसोलिडेशन, दैट इज 70,700 से लेके 70,300 लेवल. सो आने वाले वीक के लिए दिस इज व्हाट द व्यू दैट आई एम परसीविंग. August month just ended, so we can see the complete candle on the August candle, and September just it has started. So we just have the review on the sector perspective on the monthly basis, how the thing was there and what are the key levels that we are having. So monthly chart, we are at an upper end of the falling channel, but still now we haven't seen any kind of the bearish reversal sign. So bullish view continues from the monthly chart perspective, but on the daily charts we have seen that we are under the range boundness. On the high side, this is what the 17,700 is the stiff variations level. On the downside, 7,300 level is the on the lower side. That is for the short-term trading perspective. And above than that, 18,000 to 18,200 level is the next best level we can say. Nifty mid-cap has broken this falling trend line on the high side, signaling the strength of the mid-cap stocks. And it's in a ratio line that is also rising high, so it indicates that the bullish continuation sign. On a small cap, it is still under the falling channel, upper band of the channel, no reversal sign. So we continue to understand this, it has a strength, but still it lacks than the mid cap stocks on the latter part, and a relative strength is comparatively coming down, or a flattish one we can say. So small cap has a kind of the underperformance at this particular point. Nifty banking stocks, it has given the breakout from this particular point, from the falling trend line, and in this particular move the banking stocks are leading, so they are into the favorable positions. On the higher side, the sustainability above the 37,900 level will favor the bulls, and above the 38,000 39,800 will be the bullish continuation sign once we see the momentum on the higher side to this. Similar way, the financial service stocks, it has also given the breakouts on the high side. So majority of the indices we see that they are given the momentum on the high side. Nifty auto is at a kind of the all-time high level, making the multi-year breakouts on the high side, so it is also under the bullish continuation sign we can say. So it will remain under the positive zone as far as the 12,000 levels are respected for it, as it is an all-time high level, so it has entered into the uncharted territory now. Same way into the energy sectors, it was under the rising channel from the lower band of the arm, and they have started to react on the higher side. So on the underlying tone remains in positive as index sustained about the 25,000 level, and immediate resistance is the 28,500 level. So moving above that level, it will find the further tractions. FMCG stocks, again it has made the all-time high level, and it is very good structure. The role reversal level, the breach of trend line, then follow-up sign being at an all-time high level, it is a good sign for it. So they will remain under the positive zone. We are talking about the monthly perspective, so it will be having a broader view. So it will be positive about the 41,300 level we can say. Similarly, IT stocks, step by step it is started to come down. As of now, it is under the consolidation path. So Motamoti, the broader consolidation range will be 30,600 on the high side and 26,400 on the downside. Metal stocks, they have given a good upside momentum, but it is at an internal resistance level. So as of now, we are at a resistance point, but there is no reversal sign yet. So we are not concluding the negativity, but any kind of the decline from this particular point, or let's say moving below the 5660 will indicate the negative one on the lower side. Pharma stocks below the falling trend line, not reacting any kind of somewhere, so pharma stocks remains under the pressure or a negative momentum we can say. Nifty reality stocks has a very good development actually. So 10 years kind of the consolidation patch, it has broken out, prices has retested this level. Now in previous month we have seen the breach of the trend line, so that is a very good sign. So 468, a level that has been continuing around, so it is a multi-year breakout and bullish development we can say. Apart from the sub-sector perspective, we can say that then industrial manufacturing stocks are doing comparatively well.
So this is from the sector perspective, the how the sector has behaved in a previous month, and up to what level, what are the levels that they are having. So this is what in a summary I can say for the discussions that we did. So reality stocks, what are the important support levels, what are the resistance level, what will their bullish range, what are their ranges kind of thing. So these were the things. It is in summary of whatever the things that we have discussed right now. स्टॉक ऑफ द वीक में हम एक थीम को देखते हैं, दैट इज इन अल्कोहल. व्हाई अल्कोहल? बिकॉज फ्रॉम अ पास्ट कपल ऑफ वीक्स वी आर सीइंग दिस के एफएमसीजी एंड निफ्टी कंजम्पशन सेक्टर्स में काफी मोमेंटम अच्छी है. निफ्टी एफएमसीजी इज ऑल्सो एट एन ऑल टाइम हाई लेवल. निफ्टी कंजम्पशन ने भी अपने जो प्रीवियस हाई से उनको ब्रीच कर लिया हुआ है एंड इट इज सस्टेनिंग अराउंड द ऑल टाइम हाई लेवल. तो कंजम्पशन सेक्टर्स में मोमेंटम है. सो कंजम्पशन सेक्टर इज लाइक थमेटिक इंडेक्स, और जहां पे एफएमसीजी का भी कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा आता है और ऑटोमोबाइल स्टॉक्स का भी कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा आता है. So within that category, I am looking at an alcohol stocks because if you look at a certain kind of the stocks that we have the Radico Khaitan, we have McDowell, UBL, so they have a certain kind of the positive characteristics we can say. So let's say for example the Radico, so it has been structurally the good stock we can say. Let's say look at a monthly chart, so there are a decent correction has happened. So this time also the decent correction happened, prices started to pick up its momentum. Looking at the daily chart, the stock has formed a certain kind of strong base actually. So this is what the base that we are looking in. So this is rounding bottom or little bit sheepy inverted head and shoulder pattern that we can say. Prices has given the breakout, it is coming down. So 1026 to 980, that is what in potential range. So as of now we are not fixing any kind of the entry point, but this is what a kind of the support range over there means. In between this range, whenever we see any kind of follow-up activity or some sorts of variations or trend line breakout, so that will make a good sense being a stop loss below the 980 level we can say. So this is a one Radico stock we have to be observant in the range of 202 1026 to 980 range. Similar way on the other stocks, if I see, let's say McDowell. So McDowell stock is also forming a certain kind of positive characteristic. If I look at it in a higher time frame structure, so it is in very good development actually. So there was a long consolidation patch that we have seen, and it has retested this particular point. Right now the stock is not having that much kind of the momentum, but from a positional perspective it is at a very good support level. Prices are below the falling trend line, so it is showing a kind of time wise correction is going on. But once we see a certain kind of breakout about this level, so it can be a continuation sign on this. So let's say this is what the prices has fallen down, it has started to pick up its momentum. तो कुछ shorter time frame पे इसकी momentum हमें देखने मिल रही है. The third counter if we see is that this is in UBL, United Beverages. So in a United Beverages on the monthly chart if we see, so it has an again the upside momentum, it has been kind of falling and the stock has started to pick up its momentum. And looking at in the weekly chart, the prices has been in the consolidation patch and it is breaching this particular level on the high side. So this is across first of all how the things that we have jotted down is that Nifty consumption and FMCG sector is into the momentum. Underneath to that, all the sectors, all the stocks of that particular segment, that is in alcohol, they are showing some sorts of strength in this particular thing. So in the coming week I expect that in alcohol there can be some sorts of tractions can be there. So these are the some sorts of stocks for the coming week. So whatever the market specific, Nifty specific, the discussion that we did, sector specific and stock specific, that is for the educational purpose only. Thank you so much and see you in the next video.